हेलो हाँ हेलो हाँ कार्तिक। प्रमोद सर वॉल्यूम। हेलो, आवाज आवाज रहे? हाँ हाँ हेलो हाँ हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रहा है क्या? हाँ स्टार्ट सर स्टार्ट। हाँ। हेलो, हेलो लास्ट क्लास। हाँ यार, मैं स्टार्ट कर। लास्ट क्लास we have finished here. We have to page number. Okay. Last class we have learned about the excessive use of media, television for the effect and everything. But today we have to start with the topic of cybercrime. Now, what do you mean by a cybercrime? The crime which is done through computer or through a internet. The crime which oriented with a computer or a internet. Okay, any communication media. With the help of communication media, if anybody is doing a crime, then that crime are called as a cyber crime. What is the example of a cyber crime? I will give one or two example. I am sharing my ATM pin with somebody, okay, and that is the person जिससे मैंने share किया, he's a fraud person, and what he did, he removed the money from my account with the help of ATM machine. What happened? This is the example of cyber crime. Okay, so cyber crime means what? You are sharing some pin or some data or your some PAN card number, your Aadhaar card number to anybody, and they are misusing your information, okay, your data or your money, okay, and cheating to you, okay, then these are called as a cyber crime. So cyber crime matlab a computer oriented crime, a crime done through a internet. Okay. So before starting a cyber crime, again, I told you I have removed some videos for you. So again, I will show you the video for cyber crime. Just listen carefully. Welcome to the Investors Trading Academy, talking glossary of financial terms and events. Our word of the day is cybercrime. Cybercrime involves activities like raiding bank accounts and stealing information from companies. Computer crime or cybercrime is a crime that involves a computer and a network. The computer may have been used in the commission of a crime, or it may be the target. Cybercrimes are offences that are committed against individuals or groups of individuals with a criminal intention of the victim, or cause physical or mental harm or loss to the victim directly or indirectly, using modern telecommunication networks such as internet chat rooms, emails, notice boards and groups, and mobile phones. Such crimes may threaten a nation's security and financial health. Issues surrounding these types of crimes have become high profile, particularly those surrounding hacking, copyright infringement, child pornography and child grooming. There is also problems of privacy when confidential
confidential information is intercepted or disclosed lawfully or otherwise. Activity crossing international borders and involving interests of at least one nation state is sometimes referred to as cyber warfare. The international legal system is attempting to hold actors accountable for their actions through the International Criminal Court. I think you have understood about cybercrime. The video was audible, I think, for everybody. What was the cybercrime? A crime which is oriented from computer or internet. Okay, a fraud person can cheat you. Okay, if you are sharing your information like information of PAN card, information of your credit card, okay, your debit card, ATM pin, and the person can cheat you. Okay, so the crime done with oriented with the computer and internet. Now, what are the different types of cybercrime? They also have removed some small videos. You can see the types of cybercrime. When it comes to protecting your business from a data breach, you'll want to be on the lookout for a new kind of criminal, the cyber kind. They can be tough to spot, but if you can recognize these 5 common cyber criminal threats, you just may save your organization from a costly but preventable cyber attack. Number 1. The social engineer. Cyber criminals fake an identity and request data-rich information like a filled-out tax form, frequently in a time-pressured scenario. Number 2. The spearfisher. These thieves send malicious emails altered to appear legitimate, containing links that unlock access to banking credentials, trade secrets, and personal information. Number 3. The hacker. Most confirmed data breaches are the result of hackers leveraging weak, default, or stolen passwords. Number 4. The rogue employee. Current or former disgruntled workers can abuse their insider access and knowledge. Number 5. The ransom artist. The growth of ransomware as a service makes it easier for bad actors to seize control of data and force businesses to pay them or else. To learn how to defend against these cyber criminals, visit travelers.com. The different types of crime which are conducted. Okay, so they can send you the fraud email. Okay, they can use your data. Okay, misuse your data. Anything is possible. Okay, so this all type of crime is called as a cyber crime. So now we'll go in detail. Okay, about cyber crime. I think the video is very much clear. जिससे आपको ये तो पता चल गया कि cyber crime क्या है. Now we'll go in detail with respect to your textbook. Cyber crime means a crime oriented by through a computer or through a internet. And already we have seen the videos. They can send you the email or something. Okay, आपको lottery लग गया, you have win so much money and all, share the detail, I have to transfer the money in your account. और हम लोग क्या करते हैं? Yes, we share our the informations, क्योंकि हमको लगता है कि ना we have won. The ends में क्या हो जाता है? They misuse us. You have to be very careful. So what government want to say? The main motive for the government you to save, they want to save you from a cyber crime. So what question they have given? Be carefully, I will read it. Now see what they have given. Bank continuously spread the message on mobile phone about not to disclose, very important, not to disclose the Aadhaar, PAN, credit card, debit card number and other personal information if demanded by any person. Why is it so? Because it contains your bank information, your private information, your personal information. If it is shared by some fraud person, it can misuse this information. So please never share your Aadhaar, PAN card, credit number, other person number to any unknown person. Very, very important. Do not disclose your PIN to anyone while withdrawing cash from ATM machine or purchasing through a card payment. आप किसी फूड मार्ट में जा रही हो, making a card payment, you are buying anything, okay? और ATM machine से withdrawing machine, the pin किसी के साथ share नहीं करना. You have to press the pin and be careful कि आजू बाजू पीछे कोई देख तो नहीं रहा है. The pin should be very confidential. Pin खाली आपको पता होना चाहिए. Do not disclose the pin to any one person. अगर उसको pin पता चल गया, it can withdraw a cash from your ATM machine and you can suffer a big loss. Credit card payment or debit card payment हो, वहाँ पे भी purchasing बहुत careful रहना है. There is a
4 numbers of PIN, वो PIN किसी के साथ नहीं शेयर करना है. Why such instructions are given? Because they can use your ATM PIN or card payment and can withdraw money from your account or can do a online shopping, and आपको heavy loss हो सकता है with respect to money. So the crime which is done with respect to this ATM, credit card, or by using your PAN card and debit card number, Aadhaar card number, these all are the examples of cyber crime. So please never share this personal information to anybody. I think cyber crime is very much clear. Now, what are the examples? First example, start from point A. This is the first example. Consumers are deceived by showing superior items on website, but actually selling the items of either a inferior quality or impedance. कितने जन के साथ ये हुआ है? I think these are the case जो बहुत जन के साथ हुआ है. We are doing online कुछ चीज हम खरीद रहे हैं, and whatever the quality they have shown, जैसे हमने देख लिया कोई भी Amazon तो अच्छा है, वैसे बहुत सारे हैं. We see क्या this is the mobile is of 5,000, अच्छा है, उसका जो फीचर्स अच्छा बता रहा है. And when we are buying, और जब वो घर पे आता है, actually the quality of the mobile is of inferior. या any product, not only electronics, कोई प्रोडक्ट हमने ऑनलाइन बाय किया, whatever information they have given, the online information for selling, उसमें उन्होंने and everything they are showing, but when the quality they are delivering at home, actually जो उन्होंने information दिया था उसका totally उल्टा था. It is of inferior quality and it was impaired once. ऐसा हुआ आपके साथ, आपने जो बुकिंग किया वो क्वालिटी का चीज आपको घर पे डिलीवर नहीं हो रहा है, means that is also one type of what? Cyber. So this is the one example of cyber crime. Second example is a bank transaction are done using a PIN without knowledge of consumers. मैंने आपको बताया, if I am sharing with any fraud person, एक बार उसको मेरा पिन मिल गया, now what he will do, he will remove the money, or bank transaction he will do without my knowledge, and he can remove the money from my saving account. अगर ऐसा हुआ, it is also one type of cyber crime. Second example of cyber crime, bank transaction are done using PIN without knowledge of consumers. Third is confidential information about government institutes and companies obtained from internet with the help of computer programs or other ideas and misuse. This is called hacking of information. Hackers पता होंगे आपको, hackers information को hack करते हैं. Government mostly related to the defense. अभी इंडिया के डिफेंस सिस्टम का इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के हैकर्स बहुत क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन करते हैं, दे नो अबाउट हमारे डिफेंस के बारे में उनको पता चल जाता है. So जो enemies which are there, इंडिया के जो enemies है, उनके जो hackers continuous are working to remove the information of government and institute so that they can misuse, okay, and cause a heavy damage to the country. इससे governments are always alert. So there are hackers, they can collect the information from government, institutes and company का information निकाल सकते हैं and cause a damage to the institute and company. This is done by a specially trained persons called as a hackers, and this is called hacking of information. It is also one type of crime. It is also the part of cyber crime. Nowadays, crime of fake account on a Facebook and displaying of false information and thereby teasing the girls or exploiting them financially. Fake account on a Facebook. The person was boy, उसने girl के नाम पे account open करके रखा है. ऐसा केसेस हुआ था, साइन में भी हुआ था 3 साल पहले. साइन में बात कर रहा हूँ, साइन में हुआ था. एक लड़का ने लड़की के नाम पे फेसबुक अकाउंट ओपन किया था एंड उसने बहुत जन के साथ क्या किया, यू नो व्हाट वी कैन से फाइनेंशियली डैमेज, उनको वल्गर मैसेज भेज के फंसा दिया एंड देन फाइनेंशियली बच्चों को एक्सप्लॉइट किया, बाद में वो पकड़ा गया. देयर आर मेनी पीपल हु टीज द गर्ल्स ऑन फेसबुक, उनका जो अप्रोप्रिएट पिक्चर्स डाल देते, उनको रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग मैसेजेस, रात को 12 बजे 1 बजे उनको रॉन्ग मैसेजेस भेजते हैं, दिस विद द हेल्प ऑफ अ फेक अकाउंट. ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, प्लीज टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स. आई थिंक एवरीबडी इज देयर इन अ फेसबुक. देयर आर सम पीपल्स व्हिच कैन, यू नो,
provide you the false informations, can tease the girls. Girls should be very much careful. Can exploit them for financially. उनके चक्कर में मत पड़ो, मत फंसो. अगर कुछ ऐसा फंस गए हैं, डिस्कस विथ योर पेरेंट, डिस्कस विथ योर टीचर. इसका सोल्यूशन निकलेगा, डरने की बात नहीं है. There are many people do this. This is also a part of cyber crime. Misuse or illegal sale of written literature, books, सॉफ्टवेयर, फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक. आपने देखा होगा कोई भी एल्बम रिलीज हो रहा, रिलीज होने के पहले क्या हो गया, वो इंटरनेट पे आ गया. मूवीज आपने देखा होगा, मूवीज कल रिलीज होने वाली है, रिलीज के दिन ही क्या हो गया, वो इंटरनेट पे आ गया. और लोग थिएटर में जाते नहीं, अरे ऑलरेडी आई हैव सीन ऑन माय मोबाइल. इट्स कॉल्ड एज अ पायरेसी. पायरेसी वर्ड आपको पता होगा, इट्स कॉल्ड एज अ पायरेसी. तो इलीगल सेल ऑफ एनी रिटन लिटरेचर, सॉफ्टवेयर, फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक अगर हो रहा है इंटरनेट पे, याद रखना, it is also a part of cyber crime. This all what we have learned right now, 5-6 example are the examples of cyber crime. Okay, I think this much is clear. We go to the next page. Okay, some more examples of cybercrime. Electronic media is also misused by sending derogatory messages. मतलब the messages जिसमें आपने what we can say irrespectful कुछ भी languages use किया किसी के खिलाफ, उसको हम बोलते हैं derogatory messages. Spreading vulgar pictures, मैंने already बताया है, कुछ ऐसे pictures लोगों को हम भेज देते हैं, you know, girls का या कुछ का, okay, which is wrong. And inflammatory statements regarding a caste, regarding a god, religion. This thing also happen in electronic media. किसी के खिलाफ कोई भी डिगेटरी मतलब क्रिटिकल और डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड. डिगेटरी मतलब डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड है, आपने रेस्पेक्ट नहीं किया, कोई भी डिसरेस्पेक्टफुल मैसेज पास किया किसी के खिलाफ. वल्गर पिक्चर्स यू आर सेंडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन कंप्यूटर, लैपटॉप या थ्रू द मोबाइल. एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट, जिससे क्या हो सकता है, राइट्स हो सकता है, दंगा हो सकता है, फसाद हो सकता है, किसी का रिलीजियस हर्ट हो सकता है. If these things are happening in electronic media, part of cyber crime. It is also a part of cyber crime. Be careful. Exchange of information through a media like email, Facebook and WhatsApp occurs very fast. बहुत जल्दी ये spread होता है. Right now current situation में, you know, government ने, because in lockdown situation में बहुत लोग कोरोना के बारे में wrong information spread कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट ने बोला है कि व्हाट्सएप बहुत केयरफुल यूज करना है. दोस्त विल सेंडिंग अ रॉन्ग मैसेज अबाउट द कोरोना राइट नाउ थ्रू ईमेल, फेसबुक, उनके ऊपर केस रजिस्टर हो रहा है, केस रजिस्टर हो रहा है. बी केयरफुल फॉर सेंडिंग एनी मैसेजेस. However, our personal information and phone numbers are automatically spread and thereby reaches the unwanted persons. किसके पास जाता है? It goes to the unwanted person, and which leads to a malpractices like इनकमिंग ऑफ अननेसेसरी मैसेजेस. गर्ल्स के साथ होता है, ब्लैंक कॉल आ रहा है, मिस कॉल आ रहा है, वल्गर मैसेजेस, कोई मैसेज कर रहा है. ज्यादा प्रॉब्लम है, टॉक टू योर पेरेंट, टीचर्स, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो. इसका सोल्यूशन है, डरने की कोई बात नहीं है. अगर कोई आपको हैरेसमेंट कर रहा है, ओके, वी हैव अ पुलिस, वी कैन गो टू अ पुलिस स्टेशन. पहले डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाओ, पेरेंट्स से बात करो, इसका सोल्यूशन है, डोंट वरी अबाउट दिस. Some of such measures either impair or shut down the mobiles and computer. Virus, ऐसे मैसेज आपने ओपन किया एंड क्या हो जाएगा, मोबाइल एंड कंप्यूटर क्या हो सकता है बेटा, शट डाउन हो सकता है. These all are the examples of cyber crime. इसके पहले जो हमने लर्न किया लास्ट पेज में 4 to 5 points, these 2 points are the examples of cyber crime. Take it right on. So you know, this all are the example of cyber crimes, you know. Okay, so cyber crimes matlab a crime which is done through computer or through internet or through a communication media or through the electronic media. All the above mentioned incidents are the example of cyber crime. Already I have told you, committing such crimes is also one type of mental illness. जो ये लोग कर रहे हैं, जो the person who are doing these things, as per in the medical science, they are considered as mentally ill. कहीं ना कहीं उनके अंदर mental illness है. Fake messages, vulgar pictures, spreading inflammatory statements, these all
one type of mental illness. Later on, the criminal also has to face the mental stress. Very important. Later on, अगर आपने ऐसा कुछ किया, later on, a criminal also has to face the mental stress. There is a cyber crime unit, very important. A cyber crime unit has been newly launched in a police department. To handle a cyber crime, a government ने एक totally अलग सा unit बना दिया है जिसमें a special type of a policeman, special trained policemen are included. इनके अंदर इनके पास high amount of knowledge है about the computers and internet. They form a unit, okay, and that unit is called, unit मतलब team, and it is called a cyber crime unit or cyber crime team. अगर आपके साथ कोई भी cyber crime हुआ है, you can go there. These are the people, the cyber unit of policemen can help you. Has been newly launched in a police department, and I think the Maharashtra was the first state to launch a cyber crime unit. अभी तो सब स्टेट में हो गया. Maharashtra was the first state to launch a cyber crime unit. Cyber crime experts collect the details, investigate the crime, and thereby find the criminals with the help of internet. और इंटरनेट से criminals को क्या करते हैं वो लोग find out करते हैं. So what the government want to educate, हमको क्या बताना चाहता है? They want to tell you कि never share your PAN card detail, आधार कार्ड detail, your ATM pin, your credit card number, किसी के साथ शेयर नहीं करना है. बैंक never ask these things. तो कभी किसी का शेयर मत करो. When you're using a Facebook, WhatsApp, उस समय बहुत careful रहो, because there are some unwanted person can join in your group. फेसबुक में किसी को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, वो आपका रिलेटिव्स है, आपका क्लोज फ्रेंड है, देन ओनली ज्वाइन. अदरवाइज कोई अनवांटेड पर्सन ज्वाइन हो गया, कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. व्हाट्सएप में भी बहुत केयरफुल रहना, कोई भी मैसेज पास नहीं करना है जिससे कोई इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट हो, एंड जिससे क्या हो सकता है, राइट्स कैन टेक प्लेस, या किसी को हर्ट हो सकता है. दिस ऑल इज द साइबर क्राइम. एंड इफ यू आर चीटेड, अगर आपको किसी ने चीटिंग किया है about the cyber crime, you can go to the police. There are proper cyber crime unit will help you, investigate करेंगे, and they will find a proper solution. So nothing to worry, but we have to be very careful. आजकल cyber crime बहुत तेजी से बढ़ रहा है, because everybody is doing online transaction. घर पे बैठ के बैंक जाना नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन करना है. ऑनलाइन करना तो इजी है, बट द फ्रॉड का चांसेस भी इसमें मैक्सिमम है when you're dealing with online. So be very very careful. Now do you know what the agency IT Act 2000, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का एक्ट 2000 में गवर्नमेंट ने बनाया है. दिस एक्ट हैज बीन एनेक्टेड, मतलब द लॉ, फर्स्ट टाइम जो लॉ आया था, एनेक्टेड मतलब द लॉ केम, एग्जिस्ट हुआ था. एग्जिस्टेंस फर्स्ट वाज सिंस 17 अक्टूबर 2000 में लॉन्च हुआ था. दिस लॉ पास हुआ था, एंड व्हेन अमेंडेड मतलब अ स्मॉल चेंजेस टुक प्लेस. उसमें और कुछ चेंज, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस. So the law was passed on 17th October 2000, and इसमें small changes करके in 2008 it was totally what came in is the implementation. इसको implement किया. And what is the law? Law के अंदर क्या rules बना है? A person committing the cyber crime has to face the punishment like imprisonment. बहुत ध्यान से सुनना है. You don't have to do any cyber crime. बहुत careful रहना. Facebook, WhatsApp पे कोई भी मैसेज डालने पर, क्यों? Person committing the cyber crime has to face the punishment like imprisonment for 3 years and fine up to 5 lakhs. इतना heavy punishment हो सकता है. बहुत careful रहना by using an communication media. Maharashtra is the forefront in controlling the cyber crime, and it has been proved to be the first state to start a separate cyber crime unit, जो मैंने already discuss किया. याद रखना, गवर्नमेंट ने भी laws बनाए हैं, एंड जो लॉ चेंजेस के बाद जो कभी 2008 से अप्लाई है, एंड एज पर द इफ एनीबॉडी इज डूइंग साइबर क्राइम कैन गेट अ पनिशमेंट. इट कैन गेट इम्प्रिजनमेंट ऑफ इयर्स एज वेल एज पैसे का भी फाइन लग सकता है. तो बी वेरी केयरफुल. हमें साइबर क्राइम से बचना है, खुद भी साइबर क्राइम नहीं करना है, अदरवाइज हम फंस सकते हैं. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो साइबर क्राइम इज वेरी मच क्लियर. क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, वेरी मच अबाउट द साइबर क्राइम. स्ट्रेस मैनेजमेंट. Already we have discussed कि stress can cause a problem to your social health. इसके बारे में पूरा पैराग्राफ हमने रीड किया. What are the reasons for stress हमने लर्न किया, and हमने देखा stress can affect physical and mental health, and indirectly what it can affect your social health. Whether we can manage a stress, yes we can manage a stress. Stress management करना बहुत easy है. There are different ways, बहुत ज्यादा ways है through which you can manage a stress.
स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी मैंने एक स्मॉल वीडियो निकाला. I would like to share with you. Then I will explain you about the stress management, what is given in a textbook. Now, the video which I have removed for the stress management is how to manage the stress. First, we'll listen this video and then I will explain you about how to manage the stress. बहुत ध्यान से सुनना है. How to manage the stress? Mental stress is not good for personal health as well as social health. Here in this video, we will discuss some of the ways by which we can manage the stress. Nutrition. Our body needs different substances which is obtained from food. Eating balanced diet on regular time helps to keep our body healthy. In turn, it helps to manage the stress well. Rest and sleep. Our body needs rest. And sleep. Rest. We should get enough rest and sleep. It helps the body to recover from stressful events. Exercise. Regular exercise keeps the body and mind fit and healthy. You might have seen group of people laughing loudly in garden. It is the laughter club. It helps to relieve mental stress. Yoga. Yoga asanas, deep breathing, yogic sleep, meditation, and similar yoga practices are very helpful in relieving the stress. Meditation also helps to improve concentration. It brings positive thinking and helps to manage the stress well. Prioritize tasks. One of the reasons of mental stress is being unable to complete all tasks. In such case, prioritizing the task will help to manage. Hello. Yes. Start, sir. Start. Hello. हाँ हाँ सर, प्रोसीड करो. हाँ आवाज जा रहा है ना वीडियो का? यस. वीडियो ही नहीं चल रहा सर, स्क्रीन बंद हुआ है. स्क्रीन बंद है? यस यस. चालू तो है. दिख रहा है? नहीं, नेटवर्क इशू करके वापस चालू करो. अच्छा ऐसा हुआ क्या? अरे एक मिनट वापस चालू करूँ कार्तिक? यस. हेलो आवाज Yes, आ रहा yes, था? yes. आवाज आ नहीं, रहा था? आवाज नहीं आ रहा. नहीं. इसके आगे जो वीडियो दिखा उसको भी आवाज नहीं आ रहा था? नहीं, वो सब्जेक्ट्स वाला चल रहा था ना वहाँ पे. हाँ हाँ. अच्छा वापस ऑन करूँ क्या? बीच में नेटवर्क इशू हुआ था क्या? यस.
हेलो हेलो हाँ कार्तिक, अभी सर स्क्रीन दिख नहीं रहा है, स्क्रीन आपको वापस शेयर करना पड़ेगा। शेयर वापस करना पड़ेगा। अरे कैसे हो रहा हाँ, है? 2 बार हो क्लोज गया। करके वापस शेयर करो। I think there is some problem with respect to internet. Okay, again I will share it. Again I will share the screen. Don't worry. ओके अभी आ रहा है कार्तिक? यस सर। आवाज आ रहा है? नहीं, ओके ओके आ रहा है। अभी आ रहा We है? can manage the stress. यस यस Nutrition. Our body needs different substances which is obtained from food. Eating balanced diet on regular time helps to keep our body healthy. In turn, it helps to manage the stress well. Rest and sleep. Our body needs rest. We should get enough rest and sleep. It helps the body to recover from stressful events. Exercise. Regular exercise keeps the body and mind fit and healthy. You might hear loudly in garden. It is the laughter club. It helps to relieve mental stress. Yoga. Yoga asanas, deep breathing, yogic sleep, meditation, and similar yoga practices are very helpful in relieving the stress. Prioritize tasks. One of the reasons of mental stress is being unable to complete all tasks. In such case, prioritizing the Very task important for will student. help to manage the stress. Hobbies. We do activities that we love to do with great interest. These are hobbies. It could be painting, playing, singing, listening music, photography, etc. We should spend our free time on our hobbies. It encourages positive thinking and help to relieve mental stress. Social connection. Instead of staying lonely, it is better to connect socially, make friends, talk and laugh with people, express your feelings, and listen to them. This helps to grow positive thinking. In turn, it helps to manage stress. Sometimes managing the stress is very difficult. In such cases, there are chances of growing more serious problems such as depression and frustration. To help in such cases, there are many services such as counseling, psychotherapy, etc. There are some NGOs which also give a helping hand in the movement of relieving the stress. The Unified Movement Against Tobacco. The motive of this movement is to control tobacco consumption. The Salam Mumbai Foundation. The motive of this movement is to empower the children in slum area by making availability of facilities such as health, education, sports, arts, etc. This organization is also playing an important role in making the Maharashtra state tobacco free. Government schemes. There is dedicated helpline for children to state their problems and give resolution on them. So I hope you have understood this topic very well.
Thanks for I watching think this video. whatever I have shown you about the stress management. Last class we have learned about the stress, how the stress creates problem in the social health. Now today we are learning about who is doing this. कौन कर रहा है? Scroll किसने किया है? कौन स्क्रॉल किया है? प्लीज लीव द मीटिंग फास्ट, मुझे नहीं चाहिए. किसने स्क्रॉल किया है? कौन है स्क्रॉलिंग वाला है? सर आप प्रोसीड करो, मैं देखता हूँ. Now we'll do the stress management. Already I have shown in the video से आपको बहुत नॉलेज होगा कि how we can manage a stress. उसमें एक्सरसाइज भी है, टास्क भी है, ओके, साइकोथेरेपी भी है. देयर आर मेनी वेज विथ इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. तो अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, देयर आर डिफरेंट वेज जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. ओके, ऑलरेडी वी हैव सीन इन द वीडियोस, बहुत सारे एग्जांपल उन्होंने बताया है. नाउ विल डू दिस जो व्हाट वाज गिवन इन टेक्स्ट बुक. हैव यू सीन द loudly laughing citizens in the morning in a public garden? सुबह सुबह मॉर्निंग में लोग हंसते हैं, ऐसा लोगों को लगता है लोग पागल लोग हैं laughing. No, actually they are, this is the concept called as a laughter club. हंसने से the stress level comes down. स्ट्रेस को कंट्रोल करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल इज द लाफ्टर. हंसना चाहिए. ट्राई टू बी मोर हैप्पी. हमारे अंदर भी, माइंड के अंदर भी क्या हार्मोन्स रिलीज होता है, एंड दैट हार्मोन्स क्रिएट्स अ पॉजिटिविटी इन योर बॉडी. इफ यू लाफ, ट्राई टू बी हैप्पी. दिस लाफ्टर क्लब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज द स्ट्रेस. The people relieve their mental stress by laughing loudly. They relieve the mental stress by laughing loudly. तो एक फर्स्ट तरीका है, by laughing loudly we can relieve the mental stress. The first step. हेलो हेलो. Can help to relieve your stress. आपके स्ट्रेस को कम करने में हेल्प कर सकता है. तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा चल रहा है जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज टॉक टू द फ्रेंड, टीचर्स. बात करने से द स्ट्रेस कैन कम डाउन. यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? फर्स्ट था ओके लाफिंग लाउडली. दूसरा डिस्कशन विथ योर फ्रेंड्स, कजिन्स एंड पेरेंट कैन हेल्प यू टू to relieve the stress. Then hobbies like material collection. If you have any hobbies, try to follow that hobbies. Fostering the hobbies like material collections, photography, reading, cooking, sculpturing, drawing, rangoli, dancing. There are many different types of people have different hobbies. हम अपने हॉबीज को अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली द स्ट्रेस विल कम डाउन. हेल्प अस टू प्रॉपरली यूटिलाइज द फ्री आवर्स, जब भी टाइम बचा हुआ है, बाय डाइवर्टिंग द एनर्जी एंड माइंड्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग. अपने माइंड और एनर्जी को पॉजिटिव थिंग पर डाइवर्ट करो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, और ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो द थर्ड मोस्ट यू कैन डू द हॉबीज. फॉलो द हॉबीज. द हॉबीज करने से फोटोग्राफी हुआ, रीडिंग, ये भी जो भी आपको अच्छा लगता है वो करने से भी आपका मेंटल स्ट्रेस कैन कम डाउन. दिस आर द डिफरेंट थिंग्स. ये सब करने से आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो सकता है. राइट. The remaining part will continue after 5 minutes, I think. Again, जो सेकेंड लिंक सर ने भेजा उस पर आप क्लिक करो. Again, we will rejoin and remaining part हम कंटिन्यू करेंगे. Okay, after 5 minutes. कार्तिक सर.
हेलो, हाँ कार्तिक, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे। हेलो हेलो कार्तिक, बंद हो गया क्या अभी ये? अच्छा बंद कर, क्या बीच में क्या हो रहा था? नेटवर्क इश्यू प्रॉब्लम हो रहा है क्या?